नमस्कार आपण समस्त को यही भिडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज वीडियो देखिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम। पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम कौन, तार मीनिंग, फीचर्स, चैलेंजेस एंड टाइप्स हम देखा। तो फास्ट हम देखिए मीनिंग। पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम मीनिंग कौन, द पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम रिफर्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विस टू सिटीजन्स बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। मैंने कौन पब्लिक सर्विस मैंने कौन सर्विस देवा देवा जेपरि कि गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर हो पारे कि प्रोसेस हो पारे कि इंस्टीट्यूशन हो पारे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज माने जो माने कि दायी रहे विभिन्न प्रकार सर्विस को प्रोवाइड करने ना कौटू ना सिटीजन्स बाय गवर्नमेंट एजेंसी गोटे सरकारी एजेंट भाव से लोक मानू नागरिक मानू सर्विस देवे। दिस इनकम्पासेस ए वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर जो देखा किसी सर्विस जेपरिक आमर हेल्थ केयर सर्विस रही, एजुकेशन रही, ट्रांसपोर्टेशन रही, यूटिलिटीज रही एंड मोर। गवर्नमेंट ऑफ्टन स्ट्राइव टू इम्प्रूव दिस सिस्टम थ्रू रिफॉर्म्स टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड सिटीजन्स एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स। तो आपको इम्प्रूव कर पाए कहीं आम जानते भल भल हो पाए जेपरिक आम इम्प्रूव सिस्टम को इम्प्रूव करवा आम रिफॉर्म करवा से किसी नुआ नुआ चेंजेस आने टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करवा आजिकल सब डिजिटल हो गलानी। ओके सिटीजन एंगेजमेंट मैंने लोक मैंने एंगेज होगा पड़ो। नेक्स्ट देखिए फीचर। तो बर्तमान तार किसी फीचर्स देखा। तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम किसी फीचर जेपरिक यूनिवर्सल एक्सेस तो समस्त एक्सेस कर जेपरिक द गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू एनश्योर दैट द एसेंशियल सर्विस आर एक्सेसिबल टू ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लोकेशन और बैकग्राउंड। ओके नेक्स्ट देखा डाइवर्स सर्विसेज। For example, the system covers a wide range of services including healthcare, education, infrastructure development, social welfare schemes, public utilities such as water and electricity, and administrative service। आर सर्विस मध्य कौन डाइवर्स अच्छी विभिन्न प्रकार सब भाग भाग माने गुड़ाए सब क्षेत्र रही। गवर्नमेंट हायरिजरी the service are delivered through a hierarchical structure involving central, state and local government। हम जानते each with its own responsibility and jurisdiction जहाँ तार किसी उत्तरदायित्व रही। लीगल फ्रेमवर्क तो लीगल फ्रेमवर्क कौन सर्विसेज आर डिलीवर्ड इज गवर्नमेंट बाय वेरियस लॉस पॉलिसीज एंड regulations aim at ensuring accountability, transparency and equity in the distribution of public services। କିଛି ଲିଗାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ରହିବ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସର। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ମେସିନାରୀ। Administration and implementation of service are carried out by a vast bureaucracy comprising civil servants and government officials at different level। तो different level रे किसी civil servant अछंती एवं गवर्नमेंट सरकारी ऑफिसर मध्ये रहिसंती जो पब्लिक सर्विस को कोन हम प्रोवाइड करछंती। नेक्स्ट होची पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बा पीपीपीएस। इन सम केसेस द गवर्नमेंट collectors with the private sector to deliver services more efficiently and effectively। next होची e-governance। तो e-governance कौन ना increasingly digital platforms and e-governance initiatives are being utilized to streamline service delivery process, reduce bureaucratic hurdles and enhance citizen engagement। नेक्स्ट सोशल वेलफेयर स्कीम्स तो विभिन्न सोशल वेलफेयर स्कीम थाए जेपरिक द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स टार्गेटिंग वल्नरेबल पॉपुलेशन सच एज द पुअर, elderly, वुमेन एंड एफिशिएंसी एबल टू इंडिविजुअल। नेक्स्ट देखा फीडबैक मेकानिजम गोटे फीडबैक रहा दरकार। देर आर मेकानिजम इन प्लेस फॉर सिटीजन टू प्रोवाइड फीडबैक, रजिस्टर कंप्लेंट्स एंड सीक एड्रेस रिट्रेसल फॉर ग्रीवेंस रिलेटेड टू सर्विस डिलीवरी। नेक्स्ट होची मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। मॉनिटरिंग इवोल्यूशन कौन रेगुलर मॉनिटरिंग इवोल्यूशन एंड असेसमेंट ऑफ द सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म आर कंडक्ट टू द आइडेंटिफाई गैप्स, मेजर परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव इफेक्टिवनेस। सो दिस फीचर्स कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। तो यही प्रोग्राम किसी इंडियन पब्लिक सर्विस सिस्टम रही आउ कौन जब आप जानते निश्चय आप कमेंट करेंगे। एम टू फुलफिल द डाइवर्स नीड्स ऑफ दिस भास्ट एंड भेराइड पॉपुलेशन। आमर पॉपुलेशन बहुत गुड़ाई अच्छी तो समस्त को किसी फुलफिल करा लक्ष्य कि नीड्स को यही प्रकार रही। नेक्स्ट टाइम देखिए पब्लिक सर्विस किसी चैलेंजेस। तो पब्लिक सर्विस जो डिलीवरी सिस्टम रे कौन कौन चैलेंजेस आछी जेपरिक ब्यूरोक्रेसी, कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स एंड रेड टेप ऑफ्टन हिंडर द एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। नेक्स्ट होची करप्शन। करप्शन कौन ना widespread corruption at various levels of governance undermines the effectiveness and fairness of service delivery। नेक्स्ट होची इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी मध्य चैलेंज आसे जेपरिक आम देखा लैक ऑफ
coordination among different government departments and agencies leads to inefficiency service provision. नेक्स्ट होची रिसोर कन्स्ट्रेन कौन ना limited budget allocation and inadequate infrastructure hinder the expansion and improvement of the public services. Next होची accessibility. Rural and remote areas often lack adequate access to essential services, exacerbating disparities in service delivery. Next होची quality of services. Inconsistent quality standards and inadequate monitoring mechanisms result in super service delivery outcomes. Next is digital divide. Digital divide कौन ना unequal access to technology and digital literacy poses challenges in implementing e-governance solutions and reaching all citizens. So addressing these challenges जो चैलेंज हम सब डिस्कशन कले देखिले नोट्स टी रिक्वेस्ट कंसेंट एफोर्ट फ्रॉम पॉलिसी मेकर्स गवर्नमेंट एजेंसीज सिविल सोसाइटी एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू इंश्योर दैट पब्लिक सर्विसेज आर accessible, efficient and high quality for the all citizen. तो एक ध्यान देले ये सब आम कौन सुधार आनी परिबा ता चैलेंज को आम परिवर्तन करि परिबा. बर्तमान आम देखिए फॉर्म ऑफ टाइप्स. तो तार कोन फॉर्म रही टाइप रही पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम रो. सो पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम कैन टेक वेरियस फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सर्विस एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग इट्स सम कॉमन टाइप्स इनक्लूड. तो ये कॉमन टाइप हम देखिबा. फॉर एग्जांपल हम देखिबा कॉमन टाइप अछि. तो फर्स्ट डायरेक्ट प्रोविजन जबकि गवर्नमेंट एजेंसी डायरेक्टली मान डायरेक्ट रही तो डायरेक्टली प्रोविजन टू सर्विसेज टू सिटीजन फॉर एग्जांपल पब्लिक किसी हॉस्पिटल रही लॉ एनफोर्समेंट रही एजेंसी फॉल अंडर दिस कैटेगरी. इट also include hospitals, education and infrastructure development through agencies like the public work department. Okay, next is public private partnership. The public partnership मध्ये collaborating efforts between the government and private entities for delivering service especially into sectors like health, education. For instance, PPPs are often used for building and operating highways, airports and power plants. Okay, next देखिबा outscoring. Contracting private companies or non-profit organizations to provide specific services on behalf of the government such as the waste management, urban transportation and faculty management. Next होची e-governance initiatives, leveraging technology for delivery services online through portals and platforms, enabling citizens to access government services conventionally. Example की देखिबा तो include online tax filing, just welfare schemes and subsidies by the government to the support advantages sections of the society. हम जानते जो माने कि डिसएडवांटेज रहछन हम सोसाइटी से मानू सरकार के जे सब क्षेत्र एजुकेशन क्षेत्र किबा हेल्थ क्षेत्र रे किछि रिजर्वेशन दियंती किबा सब्सिडीज मध्ये प्रोवाइड करंती. Include food distribution through the public distribution scheme, the PDS, financial assistance through scheme the like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act हम आ पूर्व देखिले, मनरेगा बा MG NRGA हम देखिले, in housing scheme for economically weaker section. Next time देखिबा community based initiatives, तो involving the local communities and grassroots organizations in delivering services tailored to their specific needs such as community healthcare programs, section sanitation initiatives and skill development programs. Next is online platforms. The online platform kono increasingly governments are using digital platforms to deliver system services directly to citizens such as online portals for the tax filing, permit application and public information dissemination. ओके तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम तो काम करछि. हम ऑनलाइन आजिकल गुड़ाए काम हो